Hey there aspirant, welcome to this video. My name is Abhyuday and in this video we're going to be dealing with some myths about the CLAT exam. Before that, I know that we've been away for so long. Actually, we were busy with our mentorship program, which by the way has seen a great response, so all thanks to you guys for it. If you want to know more about it, so the details are in the description box, which you can check out later. And before further ado, let's begin. So the first myth that we have is that if you should study a certain hours every day. Well, not true, right? Because see, what matters in this examination of skills is if you are able to meet your daily targets or not. So अगर आपके जो targets हैं आप उनको पूरा कर पा रहे हो, whatever time it is taking, you give that time, right? And these targets by the way should be realistic, right? ऐसा नहीं है कि आपने 8-9 लिख दिए and you're not able to do anything. तो make it realistic, make it something which you can complete, right? And it is good to have a mentor do this for you, because अगर आप start कर रहे हो तो it is quite tough for you to understand what you need to do or not, right? So it is good to find a mentor who can tell you what to do. So if you want to measure your day ka progress, it is good to do that through targets rather than through hours. So this was the first myth. So now we have the second myth, which is syllabus is huge. Honestly, a big myth, and I feel it is very important to clarify upon this. So, see, syllabus kya hai? Syllabus is that theory wala part, right? Now, what is the objective behind this theory wala part? It is basically to make you understand CLAD and stuff like that, right? So, what is it? Well, a bit of topics in legal, a few topics in QT. So, this is the basic theory. हाँ, इंग्लिश में भी हल्का फुल्का होता है, बट व्हाट आई फील इज़ कि वो आप थ्रू प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, स्पेशली वोकैबुलरी वाला पार्ट. तो ऐसा सच कुछ नहीं है, टोन्स वगैरह एक दो बार आप देख सकते हो एंड देन दैट वुड बी फाइन, राइट? सो जो सिलेबस है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी लिमिटेड, एंड what you should do is not spend a lot of time in this, because the objective behind this is to make you understand, right? You don't have to learn things, just have to understand. Once you're able to understand, then you can start practicing aggressively now. And by the way, don't think this that your practice will come after you are done with the theory. No, that doesn't happen. Practice and theory will go simultaneously, okay? So as you're completing the theory, you should also practice. So mocks कब देने हैं? Mocks देने हैं. आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, आप PYQs देखो और थोड़ा उसको समझो कि कैसे काम करता है, रीडिंग करना शुरू करो एंड गिव योर नेक्स्ट मॉक. अगर मान लो आप मंडे को स्टार्ट करो, संडे को जो मॉक होगा आप उसको दे दो जाके, राइट? बिकॉज जो प्रिपरेशन है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द मॉक वाला पार्ट ओनली, राइट? सो मॉक्स आर वेरी क्रूशल फॉर क्लैट, एंड हम सिर्फ थ्योरी पर रिलाई नहीं कर सकते हैं. प्रैक्टिस ही यहाँ पे की है, बिकॉज ये स्किल बेस्ड एग्जाम है, नॉट अ नॉलेज बेस्ड एग्जाम, राइट? तो सिलेबस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, एंड यू शुड एम टू रीच वो प्रैक्टिस वाला जो फेज है जल्दी से जल्दी, राइट? सो दैट इज़ द सेकेंड मेथ. So the next myth that we have is less marks in mocks GK is a huge problem. Well, of course a myth, right? I understand that GK is the most anxiety provoking section, well, for obvious reasons, and I feel that coachings and peer pressure and stuff like that has a big role in that. Well, fine. I'll tell you right here that mocks GK doesn't really matter. Why? Well, there are two reasons for it. So the first one being that the pattern of asking questions in mocks GK and in CLAT, they are way too different, which you can by the way verify for yourself only. So when the pattern is quite different, then we cannot say that they are equal or at a equal footing, right? That was the first reason. The other reason is that the questions or the topics that are coming in mocks GK are from the past week, like usually from the past week only. Well, we cannot really say that the questions or the topics from the past week are quite important. And even if they are important, well, again, the same story that the pattern is quite vague, right? And it is quite fact based, whereas I feel that in CLAT it is more about holistic understanding of the topic and general awareness, right? Which you can gain by newspaper only. So the fourth myth is that math is very difficult, especially for a humanities student. Honestly, I was one. And even before that, during my early classes or early grades, I was very poor at maths. I never liked the subject. But what I did was, while I started preparing for CLAT, I took a fresh perspective.
आई थॉट कि एक बार देखते हैं ना करके, क्या पता कुछ बदल जाए। बिकॉज हम लोग जब छोटी क्लासेस में होते हैं तब हम लोग को वो डिफ़िकल्ट लगता है, राइट। इफ़ यू वुड हैव नोटिस दैट व्हेन यू जंप फ्रॉम 6 to 7, तो 6 की मैथ थोड़ी आसान लगने लगती है, राइट। तो आई थॉट कि क्या पता अब तो मैं 11th में हूँ, 12th में हूँ, तो मे बी मुझको बेटर लगे। सो वॉट आई डिड वॉज आई जस्ट स्टार्टेड आउट, राइट। एंड ऑनेस्टली दैट इज़ इट, you just need to start. Once you start, it is honestly going to be very easy, and math is very fun also, right? And apart from that, you would know that math is something that you cannot really skip, right? So you'll have to do that, right? तो math जब करनी है भाई तो कर लो, इसमें इतना सोचना नहीं है। once you start out, I feel it is going to be very fine. तो आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लो, then you start practicing, it is going to be fine only, right? So this myth is that GK is very important and should be given the most time. Well, हर जगह सुना होगा, राइट, कि जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेक और ब्रेक होती है, करना पड़ेगा, करे भी कैसे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आई नो दैट इज देयर, राइट। First thing that you need to understand is that you don't have to prioritize this over the other 4 sections. Why? Simply because of the fact that this is just one out of the 5 sections, okay? And this section, by the way, is the most unreliable, and skill component is almost negligible, right? So what you should do instead is that you need to prioritize the other 4 sections first. अपने पहले स्किल्स को डेवलप करो, फिर आएंगे नॉलेज वाले पे। मैंने भी वही किया था, राइट। आई पिक्ड अप जीके फ्रॉम जुलाई एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट अराउंड मे बी सेप्टेम्बर, ओके। तब मैंने किया था। गलती मैंने भी करी, मैंने भी कंपेंडियम किया फालतू का, ये सब चीज़ें किया, बट देन ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग इट एज वेल, राइट। अब मुझे पता चल रहा है कि कंपेंडियम्स हेल्प नहीं करती हैं, कंपेंडियम्स हेल्प करती है आपको मॉक में। हेल्प मुझको न्यूज़पेपर ही किया था, हेल्प मुझको आर्टिकल्स ही किए थे, राइट। सो दिस इज़ दैट थिंग। जीके जो हम लोग को लगता है कि इतना समय चाहिए, बट जीके के लिए ऑनेस्टली इतना समय चाहिए। इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। जीके पे समय मत वेस्ट करो अपना, जीके से आपको बेची जाती है। वेल ऑनेस्टली मोर अबाउट दिस इन अ सेपरेट वीडियो, वरना ये बहुत लंबा जाने वाला है ऑनेस्टली, राइट। तो इन शॉर्ट आई जस्ट टेल यू दैट जीके पे टाइम नहीं वेस्ट करना है अपना। अपने 4 सेक्शन जो है उनको सॉल्व करो, जीके हो जाती है, ठीक है। तो दिस वॉज दी myth. Okay, a very popular thing, right? Enrolling in a coaching is super important. Well, see, I'll give you an analogy, okay? Let's say if you want to learn swimming, okay? So can you learn swimming while being in a classroom and with a teacher and with a blackboard? No, right? You'll have to dive into that pool. Of course you'll drown, of course you'll make mistakes, but at the end of the day, you will learn how to swim. And that is exactly the thing that is required in CLAT. Why? Because this exam is once again an exam of your skills, right? Skills को आप डेवलप करते हैं प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एवरीबडी नोज दैट, राइट। उसको फॉलो करने का टाइम अब आता है। तो कोचिंग पहली चीज़ तो क्या होती है कि इट इज़ मोर अबाउट क्लासेस, राइट। क्लासेस, जीके क्लासेस, ये थ्योरी क्लासेस, वो थ्योरी क्लासेस, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई भाई। पर ये थ्योरी क्लासेस जो होती हैं भाई, दीज टचेस टिल आई डोंट नो अक्टूबर नवंबर, क्या यूज़ है इसका भाई, क्या यूज़ है? एवरीबडी नोज कि लीगल में जब मॉक देते हैं तो एक पैसेज होता है बगल में, क्लाट में पैसेज होता है बगल में। भाई प्रिंसिपल आपको वहाँ से निकालना है, अपने दिमाग से नहीं निकालना है। थर्ड का पैसेज आए तब भी पढ़ो उसको। सो honestly, I don't know anybody who would tell me that I skipped this passage in CLAT's legal just because I knew that. Nobody told me that. Because कोई नहीं करता वो, right? आपको भी वो नहीं करना है। लीगल का जो पैसेज होगा आपको मिलेगा, लीगल सुधरेगी प्रैक्टिस करके, थ्योरी पढ़ के नहीं सुधरेगी। तो मेन पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस कोचिंग में नहीं करवाते हैं, राइट। वो बोलते हैं घर पे जाकर प्रैक्टिस करो। अरे ये क्या बात होती है, राइट। मेन चीज़ आपको बोलना है कि घर पे करो, आप वहाँ पे आके पता नहीं क्या कर रहे हो फिर। That is one thing about coaching. So the other part is that everybody thinks that they will be guided, but the point is that it's just the opposite, okay? गाइडेंस के नाम पे आपको क्लासेस थोपी जाती हैं, बार बार क्लासेस करते रहो, आओ ये फिर क्लास करो, तुमने ये क्लास नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मॉक्स क्यों नहीं कर रहे हो, करो मॉक्स, एनालाइज करो। अरे कैसे करे, बताओ तो मुझे, कैसे करूँ मैं? आई टेल यू गाइज, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर 2024 का पेपर, आई वाज वेरी सीरियस, ओके, बट मेरे पास वो गाइडेंस नहीं थी, and I guess that is why I failed. So it is much better to find a mentor than coaching. Coachings don't really help. आपके पैसे खाती हैं वो, right? आपका, आपके माँ बाप का हार्ड मनी, it just goes to waste, right?
Coaching at max you can take the mocks, they are helpful, right? Apart from that, I don't find anything that is quite helpful in coachings, right? So that is one thing. So I shifted here to tell you a few truths as well. Okay, the first one is that you should finish your theory quickly and it should not take more than 2 months. Of course, I had told you this before कि theory is just required once you are understanding the things. एक बार जब वो हो जाएगा, then move to practicing more and more, right? Other part is that you should study daily and finish your realistic targets. Be consistent. Consistency is honestly the key, right? रोज़ पढ़ो क्योंकि प्रैक्टिस करना होता है हमें. प्रैक्टिस हम लोग को रोज़ करनी है, रोज़ बेटर बनना है, रोज़ मिस्टेक्स करनी है, उसको रोज़ एनालाइज करना है और बस ऐसे ही करते जाना है एंड इट विल ऑल बी गुड, राइट? अदर पार्ट इसकी यू शुड स्टार्ट मैथ्स नाउ, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस. देखो मैथ्स वंस अगेन बस स्टार्ट करने की बात होती है, इतना कुछ टफ नहीं है. जस्ट स्टार्ट इट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ऑनेस्टली वेरी सून इट विल ऑल बी ऑल राइट. ठीक है, दिस वॉज अबाउट मैथ्स. Now we have that just read newspaper daily. Don't give more than 2 hours to GK. देखो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे उसमें आपका मेजॉरिटी जीके एनीवेज कवर हो जाएगा. वो बात की बात है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वहाँ पे जीके हो जा रहा है, देन मे बी आप थोड़े आर्टिकल पढ़ लो एंड इट इज़ फाइन, राइट? अलग से जीके इतना ज़्यादा नहीं करना होता है. उससे बेटर इज़ दैट कि यू शुड फोकस मोर अपॉन योर अदर सेक्शंस. दैट सेल्फ स्टडी प्लस यूसी इज़ द वे टू गो इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड लैक्स ऑन क्लैट. Of course do, right? Why? Because we are not a coaching. We are mentors, okay? We'll guide you based on your strengths and weaknesses, understand you, and then guide you on that aspect only, right? So, if you want to give us a try, you can surely do that. Details are in the description box, and we'll welcome you with open arms, right? Sections PYQs, analyze them with consistency. Exactly. You would know that practice makes a man perfect. But how do we achieve this perfection? That is through making mistakes, right? We'll make mistakes, we'll analyze them, and then we'll get better and better, right? So that was it. Thank you so much for being here. I hope you liked our content. If you wanna join us, then details are in the description box, and I'll see you guys in the next one.